Hey Tan fam, welcome back to my YouTube channel. My name is Mrs. Tanya Joshi aka Relate with Tanya and I hope you guys are doing really well. आज का video from the title you must have understood is how to cover your dark circles. So without wasting any time, let's get started. So आज I'm going to finally share how I cover my dark circles. Now there is no shame or any harm in having dark circles. Dark circles के काफ़ी वजह होते हैं. सबसे पहला रीज़न तो ये होता है कि इट कुड बी अ हेरिडिटरी इशू. जैसे मेरे फैमिली में थोड़ा सा माई फादर साइड हैव डार्क सर्कल, सो प्रॉबेबली दैट्स व्हाई आई गॉट इट. दूसरे रीज़न होता है अगर आप चश्मा पहनते हो तो आपके यहाँ पे हमेशा थोड़ी डार्कनेस रहेगी. इट्स बिकॉज ऑफ द स्पेक्स का थिंग दैट आई हैव गॉटन एज पर द डर्मैट. And third thing is that you're not sleeping enough and there's a lot of stressful lifestyle. So there are various reasons, and definitely you can lighten your dark circles by going to the dermat and doing your skincare regularly, sleeping well, exercising, everything. So ऐसा नहीं कि आप उसको कम नहीं कर सकते, but maybe to a limit. So I just wanted to share this part before I move on to the video, that it's absolutely okay कि अगर आपके dark circles I have to been very comfortable with my skin and been okay, like you know, if I have dark circles. But हाँ, कभी कभार जब हम मेकअप करते हैं we would love to cover our dark circles, especially when we are going to any function or anything. And also I'm sick and tired of hearing the stereotype that अरे तुम बहुत थकी हुई लग रही हो. I'm sure you guys will be able to relate to this, that every time you don't apply a kajal or if you have not applied any makeup, everyone presumes that you're really tired. So that's really annoying. बट हाँ, आज का वीडियो का यही टॉपिक है कि हम ये डार्क सर्कल्स को कैसे हाइड करते हैं. सो सबसे पहले तो आई हैव अप्लाइड अ फेशियल ऑयल ऑन माई फेस बिकॉज आई हैव एक्सट्रीमली ड्राई स्किन. एंड मैंने यूज़ किया है कलाबा का ड्राई सेलुलर ऑयल. वो मैं ऑलरेडी लगा के 2 मिनट तक उसको मैंने सेट होने दिया है. वेट फॉर लाइक 3 to 4 मिनट्स एटलीस्ट आराम से एक्चुअली फॉर इट टू अब्जॉर्ब इन टू माई स्किन. उसके बाद आई एम गोइंग टू यूज़ दिस निविया का मॉइस्चराइज़र. ये काफ़ी मैं यूज़ कर चुकी हूँ. बजट फ्रेंडली ऑल्सो. इफ़ यू कैन सी I've used it quite a bit. तो दिख भी नहीं रहा बट हाँ, मैंने काफ़ी हद तक यूज़ किया है. इफ़ यू कैन सी काफ़ी अंदर तक. आई हैव टू स्कूप आउट टू टेक द मॉइस्चराइज़र. एंड मैं अच्छा खासा मॉइस्चराइज़र लेती हूँ. एंड फर्स्ट आई अप्लाइड ऑल ओवर माई फेस. एंड मैं थोड़ा अपने डार्क सर्कल मतलब अंडर आइज में भी उसको थोड़ा सा डालती हूँ बिकॉज दैट पार्ट ऑफ आवर स्किन इज़ वेरी समटाइम्स कैन बी वेरी ड्राई कुछ लोगों के लिए खासकर. एंड मेरी स्किन तो ड्राई है तो मैं डेफिनेटली ये प्रेप करती हूँ. I अच्छे से massage it really well into my skin and I give it at least a minute. उसके बाद अगर आपकी अंडर आइज कुछ ज़्यादा ही ड्राई है तो आई वुड रेकमेंड यू टू ट्राई अंडर आई क्रीम, हाइड्रेटिंग अंडर आई क्रीम. ये माई ग्लैम का है. ये भी मेरा काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है. आई रियली लाइक दिस वन. मैं थोड़ा सा अपने अंडर आइज में डालती हूँ बिकॉज आई हैव एक्सट्रीमली ड्राई अंडर आइज. अगर आपके एक्सट्रीमली ड्राई अंडर आइज नहीं है तो आप इस चीज़ को स्किप कर सकते हो. बट जिनकी है आप थोड़ा सा लगा के उसको अच्छे से मसाज कर लो. Just massage it really nicely ताकि थोड़ा सा darkness, or sorry, not the darkness, the under eyes become really hydrated. And then you give it like about 1 or 2 minutes, let it absorb into your skin, and then we'll get started. So now we are going to move on to the next step. I'm going to take the Forever 52 का camouflage palette. ठीक है, I really like this palette. ये मैंने काफ़ी यूज़ किया है. इसका ड्यूब भी आता है मार्स का. अब वो भी बहुत अच्छा है. अगर आपको ये नहीं लेना तो आप वो ले सकते हो. सबसे पहले नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड, जैसे मैं हूँ वार्म स्किन टोन मीडियम टू डार्क, सो आई एम गोइंग टू टेक एन ऑरेंज कलर करेक्टर. ये थोड़ा सा डार्कर वाला. नाउ यू कैन आइदर टेक अ फ्लैट ब्रश एंड देन अप्लाई एंड देन ब्लेंड इट आउट विद अ ब्यूटी ब्लेंडर, or you can take a brush and just directly dip into it and apply. ये पैक का 272 brush है. I'm going to take this color orange corrector and first cancel out the darkness that is there. Okay, so I'm just going to apply ऐसे. ज़्यादा नहीं करूँगी, only little. देखो. And I'm just going to apply a little bit here because इधर भी एक dark patch है. And a little bit around the mouth because in Indian skin tone में usually mouth के around pigmentation होना is very normal. Even on your forehead it's normal. तो मैं थोड़ा सा इधर भी करूँगी अपने forehead पे because मेरी यहाँ पे tanning हो रखी है. So what happens with the orange color corrector is that it tends to cancel out the darkness that is there on your skin, the darkness. So you can see that it's at least eliminated the darkness. You can see the difference also over here.
and you can see that it's eliminated the darkness. What is going to happen is now अभी इसके बाद I'm going to first cover this orangeness. Why we're going to do that is अगर वो directly हमने foundation के साथ mix किया, it may still turn grey for those who have slightly more prominent dark circles. अगर आपके पास इतने dark circles नहीं है and it's just slight and you want to give a light coverage, then just go for a concealer that is 1 or 2 shades darker to your skin tone, and that will cover the dark circles, and then you can finish your foundation routine and then set your face. That's not a problem. But this is for people who tend to get a lot of grayness around the eyes even after using a concealer 1 to 2 shades darker. तो सबसे पहले आपको orange color corrector करना बहुत ज़रूरी है. उसके बाद we are going to take a concealer that is 1 to 2 shades darker than our skin tone. Like for me it is this one, and I'm going to apply it on top of this orange corrector. Now what I'm doing is, it's called camouflaging. I'm just hiding the orangeness ताकि वो foundation के साथ भी उतना mix नहीं हो. Just very little. It is slightly darker to my skin tone. That's okay. अगर मैंने exact डाला ना वो तब भी grey हो जाएगा. It has to be 1 to 2 shades darker. Yeah. अभी इसके बाद I'm going to apply foundation on one side. I'm just going to show you an example. मैं इस side को empty रखने वाली हूँ and I'm going to show you the difference that it makes. So अभी I'm going to take any foundation of your choice. मैं ये Huda Beauty का stick foundation ले रही हूँ. This is in the shade Amreti and I'm just applying. I'm not applying very close to the eye. नहीं तो ज़्यादा product हो जाएगा. Already we have applied too much on the under eyes, तो उतना ज़्यादा product लगाना नहीं है. This is little bit extra layer, but this is the technical way, honestly, in terms of makeup. Like I have taken makeup courses, and this is honestly the technical way of covering your dark circles. Unless you naturally have such good skin, naturally have good skin, you can skip the orange color corrector step. Like I said, if you have very light dark circles, then you can just use a concealer 1 to 2 shades of your skin tone, and honestly just do it. So now I've applied my foundation and you can see it's an exact match to my skin tone. Yeah, you can see the difference over here. And now we're gonna under eye highlight. So I'm gonna get my concealer and come back. Now I want to brighten up my under eye, so I'm going to take a concealer that is 1 to 2 shades brighter than my skin tone. अगर आपको highlight नहीं करना है and you just want to match it to your skin tone, then go for a concealer that matches to your skin tone. इसके बाद आपका under eye gray नहीं होगा. I have taken a concealer that is 1 to 2 shades, actually 2 shades lighter to me for highlighting purposes. So I'm just going to apply a little bit over here. This is L'Oreal का Infallible concealer. It's a good full coverage concealer. Works really well if you have prepped your under eyes. Even if you have dry, it does not create a patchy effect. तो ये मैंने अभी लगाया है एंड अब मैं इसको ब्लेंड आउट कर लूँगी. दिस इज़ द शेड 317. सैडली इसमें शेड वैरायटी बहुत कम है. इफ़ यू आर स्लाइटली मोर डार्कर और डीपर स्किन टोन, ये वाला शायद आपके लिए वर्क ना करे. मीडियम स्किन टोन के लिए दिस वर्क्स वेरी ब्यूटिफुली एंड यू कैन सी आई एम ब्लेंडिंग इट आउट एंड इट्स ब्लेंडिंग आउट वेरी नाइसली. And if you can see, it has actually covered up my dark circles. अब मैं इसको यही same, I will use this on my lid and then do my eyeshadow later. And this is it. You can see a huge difference between this side and this side, how much it has covered the under eye. अब मैं just इसको थोड़ा set करके I'll finish my full base and come back for you guys to see how it looks. I hope you guys found this really useful. कोई भी doubt हो guys, please आप उसको comment section में पूछना. I love teaching and I would love to, you know, share knowledge as much as possible. And मैंने ऊपर भी concealer लगा दिया है. And now I've done it. Now you can see a huge difference between this side and how it's not peeking through and not turning grey. And yeah, I will finish my entire base and come back.
So this is how my base looks once I have set it, done my brows, eyeshadow, sab kuch, and you can see that the grayness is not peeping through. So this technique really works. It's tried and tested, and I have struggled with covering my dark circles for a while. So मुझे 1-1.5 साल तो लग ही गया understand करने में ये theory, but I thought why not to share it with you guys, because I know a lot of you guys sometimes face this issue while doing your makeup. So I hope you enjoyed this tutorial, and I will see you guys next time. Please don't forget to like, share and subscribe to my channel. Don't forget to follow me on Instagram. My Instagram handle is Relate with Tanya, and I will see you guys next time. Bye guys.